Friends, now I will discuss about the chapters. The Summer of the Beautiful White Horse, that is written by William Savoy. And here, first of all, I would like to say the character who are as Murad, Aram, John Mayo and Uncle Khusro. You see, Murad is 13-year-old cousin of the narrator, and he is lively and very crazy. Then the second main character is Aram himself, who is the speaker of the chapter, a narrator, and he justified Murad's stealing of horse for the purpose of horse riding. Here, the next is John Byro, who is a farmer and an owner of beautiful white horse. And the fourth person is narrator's uncle, who is furious and impatient, irritable, and most of the time he stopped the other people to talk, and he wanted to talk more. It means he did not like to listen enough, only wanted to boast and talk about. Even he was so careless. If there was something panic, never become so impatient. That very time, he tells there is nothing, something will happen, and that will clearly finished. See, then I would like to say the chapter sketch firstly. Here, the whole story goes around two of the Armenian boys. That the first one, the Murad, and the Aram himself. What happened? They are formed for horse riding and for very purpose. Murad once stole a white horse and then invites his cousin Aram. They rode for a long. They had decided to keep it for 6 months, and in that course, the narrator tells here that was the purpose for riding. Whether in the chapter is still told that they were belonging to Galokian tribe, and in that time they were so known for their trust and honesty. Now I will discuss with some main points. As at the beginning, you knew about two of the boys, Armenian boys, and chapter sketch. इसमें आपने क्या देखा कि दोनों लड़के जो एक कजिन हैं, और उसमें मुराद जो है और अरम के इर्द गिर्द ही कहानी है, जिसमें 4 कैरेक्टर्स आपने देखा. मेन कैरेक्टर्स हैं जो अरम हिमसेल्फ स्पीकर, हु इज 9-year-old, एंड मुराद जो 13-year-old है, और थर्ड जो है खुसरो है, एंड द फोर्थ वन इज जॉन बायरो. तो ये 4 कैरेक्टर के इर्द गिर्द जो है कहानी में आपको जानना है, बट मेन देयर आर 2 and they are Aram and Mr. Murad. What happens? There are few main points of the chapter by what you can understand the whole summary of the chapter. Chapter की whole summary जो है इसके आसपास ही आप बुन सकते हो. यहाँ फर्स्ट जो है बताया Aram's recall of an experience. क्या है कि he is remembering that time when he was sleeping at and very early morning he could hear the tap sound on the window pane. सुबह में एकाएक नींद उसकी टूटती है टैप साउंड से, जो विंडो पे टैपिंग हो रहा है, और when he jumped from his bed he found there was Murad. वहाँ उसका कजिन मुराद है, और then he saw he was on
हर्स देखता है कि एक घोड़े पर है, डेट इज वाइट एंड वेरी ब्यूटीफुल, वो घोड़ा सफेद है और बड़ा सुंदर है। फिर he was suspected as their family was poverty stricken and they had not enough even for their food, but it was so it was not possible to buy a hearse. Then he thought surely it was stolen. उसे लगता है कि यह कहीं ना कहीं चुराया गया है। यहाँ गारोवालियन फैमिली से बिलोंग भी करते हैं और डेट फैमिली एज आई टोल्ड दे वर सफरिंग विद पॉवर्टी बट दे वर नोन फॉर देयर ऑनेस्टी एंड ट्रस्ट। अपनी ईमानदारी और विश्वास के लिए जो है जाने जाते हैं। His explanation about the white horse की जो है एक्सप्लेनेशन करता है, देखने से ही काफ़ी बढ़िया खूबसूरत जो है वह हर्ष है और उस पर जो है मुराद बैठा हुआ है। एंड ही इनवाइट्स आरम फॉर राइडिंग द हर्स, वह आरम को भी इनवाइट करता है हर्स राइड करने के लिए। अब देखो नेक्स्ट व्हाट हैपेंड, आरम कुड नॉट इंसिस्ट द ऑफर ऑफ हर्स राइडिंग। क्या हमने बताया थ्रू दिस लाइन यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट्स द मैटर इनसाइड द चैप्टर। आरम को पहले तो लग जाता है, सस्पेक्टेड होता है कि यह जरूर जो है चुराया गया है। पूछता भी है, ही आस्क्ड द क्वेश्चन बट कुड नॉट गेट द आंसर फ्रॉम मोराड। मोराड जो है कोई आंसर देता नहीं है। बट आफ्टर इनविटेशन he could not resist himself, वो खुद को रोक नहीं पाता है, तैयार हो जाता है हर्स राइड करने के लिए because he was too fond for horse ride। वो भी जो है हर्स राइड का शौक रखता था और ऐसे में चला आता है। both went to ride the horse, दोनों जो है चले जाते हैं to vineyard to Arcad for riding the horse। Aram rides the horse alone। Aram he wanted to ride the horse, वो चाहता था कि हर्स को जो है alone जो है राइड करे। He saw Murad who was riding horse nicely, he knew how to ride। Aram also ride and he asked for riding himself alone। मुराद जो है उसे घोड़े दे देता है and he told it is not possible for riding a horse to you can't ride yourself, तुम खुद से जो है राइड कर नहीं सकते हो। it will take a long time for you, लंबा समय लगेगा तुम्हें, even 2 years, at least 1 year you will get time। वो ऐसे भी एक लंबा समय का जिक्र करता है, तुम्हें लंबे समय लग जाएंगे सीखने में, तुम हर्स राइड नहीं कर सकते हो। बट एरम एज ही वाज टू फॉन्ड ही गॉट राइड ऑन हर्स। बट व्हाट हैपेंड, ही हैज नो नॉलेज हाउ टू राइड द हर्स। व्हेन ही किक्ड इनटू द मसल्स ऑफ हर्स, द हर्स ran and after few distance going he was turned from hers। क्या होता है कुछ ही दूर जाने के बाद जो है क्या जो आरम है वो गिर जाता है। he was fallen awake and the horse was far away। हर्स चला जाता है, दूर चला जाता है। then they were missing the horse। Murad ran quickly, they both ran behind and finally after few hours searching they could get that white horse। घोड़े को प्राप्त कर पाते हैं। then what happened, they decided to hide the horse। अब फिर जो है उन्हें जब घर जाना होता था तो उन्हें छिपाना था। and so they chose another farmer who has a good barn and they kept their horse there। They were there for 2 weeks, they rode horses, they knew how to ride in good way। 2 सप्ताह तक लगभग जो है उन लोगों ने हर्स राइड किया
और बड़ा मस्ती किया। What happened then? John Byron's sadness over his missing hers. यहाँ पर जो है जॉन बायरो की जो है सैडनेस की बात की जाती है। जॉन बायरो who is the owner of dead hers, he was very sad whether he saw them hers riding, but he could not believe as that same hers they had, because he knew their family who are belonging to that honesty, for their honesty and their trust, so he could not claim it is mine. अब यहाँ पर देखो वो ब्लेम नहीं करता है कि तुम लोगों ने जो है मेरा घोड़ा चुराया है। He went to their house and at very time what happened? They talked about he talked about his own house to Mr. Khusro. Mr. Khusro से बात करता है to Arum's family talk, but could not tell that yes your children had stolen their house. उसने ये नहीं कहा कि आपके बच्चों ने जो है हाँ हमारे घोड़े को चुराया, but he told I am missing my hearts for a long and किसी ने चुरा लिया, ऐसी बात करके चुरा जाता है। But in that course Aram informed Murad about John Byro. Aram मुराद को इस खबर देता है कि जॉन बायरो ने ऐसे ऐसे बात जो है कहा है, वो अपने घोड़े को मिस कर रहा है। The boys decided to return the horse, but not very soon. उन लोगों ने जो है लास्टली जो है रिटर्न करने की बात सोची, but in that course as I would like to tell to Armenian boys, there are also the facts about the chapter. Aram and Murad tribe famous for honesty. It is about after the anxiety of Murad, anxiety of the John Byro, Murad and Aram had decided to return. क्या होता है अंत में ऐसा होता है, हम लोगों ने देखा कि अब तो हाइड करना जो है इम्पॉसिबल है, it is not possible for them, and so they had decided. तब उन लोगों ने सोचा कि नहीं अब पकड़े जाएंगे, उससे बढ़िया है कि हम जो है घोड़े को रिटर्न कर दें। इस क्रम में एक चीज़ और जो है आप देखोगे कि ऑथर जो है छोटा बच्चा होता है इज ऑफ 9 years old एंड टू लिटिल, बहुत छोटा होता है और उससे अपने आप की एक कह सकते हैं इन्फेंसी के चलते वह इसे चोरी नहीं मानता है। जो स्टील किया हुआ था मुराद ने, उसने इसको स्टीलिंग नहीं कहा कि कह रहा है कि इट इज़ फॉर अदर पर्पस, इट इज़ फॉर राइडिंग पर्पस, सो इट इज़ नॉट स्टीलिंग। वेदर इफ वी विल सेल इट टू गेट इनकम देन इट विल बी नोन एज स्टीलिंग, तब यह चोरी कहा जाएगा। तो यह एक डिफरेंस भी बताता है और फिर अरब, और उस डिफरेंस में यह बताता है कि उन लोगों ने जो है हर्ष राइड के पर्पज से लिया था और 6 months के बाद जो रिटर्न करने का आखिरकार इन लोगों ने डिसीजन ले लिया था। सो इट वॉज नॉट स्टीलिंग बट दे कुड नॉट कीप सीक्रेट, सो दे हैड प्लान टू रिटर्न। तो आपने देखा कुछ और भी जो है आप यहाँ देख सकते हो कि उस मेन पॉइंट्स उस चैप्टर के इनसाइड चीज़ों को डिनोट किया गया है। स्टीलिंग हर्स एंड मनी इज डिफरेंट, एज आई टोल्ड enjoyed their horse ride in the country where were vineyards, orchards, irrigation ditches, countrysides. Murad kicked his horses into the hearse and shouted, "Wajire, run!" So this type of excitement they showed, and day by day they rode. So it is the whole. Whenever we will talk about the chapter में बस दो बच्चों ने कैसे जो है हर्ष राइड किया है इसी चीज़ को बयां किया गया है, और इट इज़ देयर फॉन्ट, यह उनका एक शौक था। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग द चैप्टर वीडियो।